Hello students, today I will start the new topic refraction of light. In previous I explained about the reflection of light, but today's refraction of light. So let's start. First, what is refraction? The change in direction of light when it passes from one medium to another obliquely is called refraction of light, right? Change in direction में change होता है when it passes from one medium to another. So just I will explain through the diagram. Look here, this is air here, and this is the glass slab. So there are two medium, one is the air and another is a glass. At the place of glass you can take water also, having the same result. So you can see here when the rays, incident rays, falls on the glass slab, its direction is changes. It comes, this incident ray now after touch this point, this is reflected in this direction. So here refraction takes place. And the refraction of light takes place at the boundary between the two medium. Means यहाँ पे दो medium का boundary कहाँ है? This PQ is the boundary, and here refraction takes place. So every time refraction takes place at the boundary between the two media. And you already know the angle between the incident ray and normal is called a एंगल ऑफ इंसिडेंस. देखो यहाँ पे फिर से मैं बता रही हूँ, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रेज, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड normal is called the angle of reflection. And one thing more students, when you studied about the reflection of light, your first laws was angle of incidence is equal to angle of reflection, but in case of refraction I is not equal to R, means angle of incidence is not equal to angle of reflection, right? Now cause of refraction. ये refraction होता क्यों है? You think ना? Why refraction of light takes place? The refraction of light is due to the change in the speed of light on going from one medium to another medium. Okay, because जो speed of light है, it is not constant everywhere. It's a speed different in air, which is a 3 into 10 raised to 8 meter per second. Again in water and glass, its speed is different. That's why refraction takes place. Greater the difference in the speed of light in the two media, greater will be the amount of refraction of light. Right? क्या बताया? अगर स्पीड जो लाइट का स्पीड है वो ज़्यादा रहेगा जहाँ पे उनका डिफरेंस टू मीडियम में, तो रिफ्रैक्शन भी टेक्स प्लेस मोर. Now your next topic, why a change in the speed of light causes refraction of light. अब ये स्पीड, लाइट का स्पीड ही क्यों चेंज होता है? ये भी तो तुम सोच सकते हो ना. Children every time ask why. Whenever whatever you will explain, then again they will ask why. That's why I again make answer of you all why. So now why a change in speed of light causes refraction of light? So this is explained by using the wave theory of light. A beam of light is made up of tiny waves. Understood है ये लाइट किसका बना होता है? छोटे छोटे वेव्स का. When a beam of light traveling in a certain medium falls obliquely on the medium of another medium, then one part of the light wave enters into the other medium first and its speed changes first, but the rest of the waves enter the other medium a little later and hence its speed changes a little later. राइट समझा? क्या है कि लाइट क्या है, वेव के फॉर्म में है, तो यू नो कि वेव कंप्लीटली ऑल जितने भी वेव्स है वो तो स्ट्रेट है नहीं. सम पार्ट्स विल टच द बाउंड्री फर्स्ट एंड अदर पार्ट विल टच द बाउंड्री लिटिल लेटर. सो विच पार्ट टच द बाउंड्री फर्स्ट, देयर स्पीड
changes first, तो उनका स्पीड भी पहले चेंज होगा. And which parts touch the boundary later, little later, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, little later, its speed will change little later. That's why change in the speed of light takes place. The fact that the speed of light waves on one side of a beam of light changes a little before the change in the speed of light waves on its other side cause a change in direction of light. अभी देखो ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. अब ये क्या है? A medium in which the speed of light is more is known as optically rarer medium, and a medium in which the speed of light is less is known as optically denser medium. So it has been found that when a light of and rarer medium क्या होगा? Air will be a rarer medium because यहाँ पे speed of light क्या है? ज़्यादा है. और water और glass में speed of light less है comparison to air. That's why glass will be considered as a denser medium, or whenever I'm asking about water, it also be considered as a denser medium. Effect of, and one thing more, when a light goes from a rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. ये normal की ओर मुड़ जाएगा. Just let me explain it again. Look here. When this ray of light comes from air to glass, what happened? Its direction changes. It bends towards the normal. So when light moves from rarer to denser medium, it bends towards the normal. And here you can see when the light denser to rare means glass से air में जा रहा है, then it moves away from the normal. क्लियर हुआ? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. लाइट ये एयर है, सो इट इज अ रेयर मीडियम, एंड दिस इज ग्लास, इट इज अ डेंसर मीडियम. सो व्हेन द लाइट goes from rarer to denser, it moves towards the normal, and when denser to rarer, it moves away from the normal. ये normal से away हो जाता है. And one thing more, suppose this incident ray will goes straight. अगर ये bound नहीं, यहाँ पे reflect नहीं होता in this direction, तो it is supposed to be go straight, and this rays is known as a emergent ray. Now incident ray and emergent ray both are the parallel, and the perpendicular distance between the incident ray and emergent ray is called a lateral displacement. Clear है? क्या है lateral displacement? Perpendicular distance between the incident ray and emergent ray is called lateral displacement. So only one thing you have to remember, that when the light goes from rarer to denser, it moves towards the normal, and when goes from denser to rarer, it moves away from the normal. Okay, I hope it becomes very clear. Now मैं अभी इसका यूज क्या है वो बताने वाली हूँ. Let's 2 minutes. इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इसका अभी क्या इफेक्ट है? तो डे टू डे लाइफ में वी सी द लॉट्स ऑफ इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. हियर आई विल एक्सप्लेन सम अबाउट आउट ऑफ दिस वेरी फ्यू टॉपिक्स आई विल एक्सप्लेन. तो फर्स्ट है, अ स्टिक हेल्ड ऑब्लिकली एंड पार्टली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द वाटर सरफेस. ये हमें मुड़ा हुआ दिखता है, क्यों? Second है, a pool of water appears to be less deep than it actually is. Third, the stars appears to twinkle on a clear night. रात में जो stars तुम देखते हो वो चमकता हुआ दिखता है. तो all of the reason behind this refraction of light. So I will explain only one topic, and you can explain all topic by the same, by writing the same reason. एक ही reason लिख के तुम सभी का आंसर दे सकते हो. So but मैं सिर्फ एक का explain कर रही हूँ. जो पहला है, a stick partly immersed in water appears to be bent at the water surface. Same, when you will put a coin in a water bucket, it appears to raise
from the actual position, अपने पोजीशन से उठा हुआ दिखता है। इसका देखो, दिस इज अ स्टिक, ये तुम्हारा क्या है, स्टिक है, एओ पानी में है। ये हमारा, इसका एक्चुअल पोजीशन जो पोर्शन विच इज इनसाइड द वाटर इज एक्चुअल पोजीशन इज बीओ, बट इट्स लुक्स एज अ बी आई, ये बी आई के पोजिशन में दिखता है। क्यों दिखता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। अभी मैं इसका एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, द पोर्शन विच इज इनसाइड द वाटर, तो ये जो लास्ट इंड है ओ है, तो यहाँ से लाइट निकलेगी, तो लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट ओ से ओ डी जा रही है। तो ये क्या है? वाटर है, सो इट इज डेंसर मीडियम एंड दिस इज अ एयर, इट इज अ रेयर मीडियम। तो हियर लाइट इज गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। क्लियर है सभी किसके लिए? लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम। सो व्हाट हैपन? लाइट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ओके, सो ओ डी when touch the boundary it moves away from the normal, and another rays which comes from the end point OC, it also goes from denser to rarer medium, so it moves away from the normal. ये दोनों रेज हमारे यहाँ से अवे होके यहाँ पे आ रही है, ठीक है, CX और DY के फॉर्म में। अभी क्या हो रहा है, ये रेज के बैक साइड को वी विल एक्सटेंड, देन इसको जो एक्सटेंड किया है, देन these two rays meet at the point I. Seems होता है, पता चलता है, मालूम होता है, बट एक्चुअल पोजिशन इज अभी हो, बट seems these two rays meet at the point A. So here the image of the point O जो है, ये इमेज यहाँ पे बनता हुआ वर्चुअल इमेज पता चलेगा BI. So we see the position of the end point of the stick BO is a BI, right? And why it's happened? Due to refraction of light. So children, so other questions, give reason type of questions you can explain on this basis. Only where the suppose it is a stick and at the place of a stick it is given a pencil, so you draw the diagram of pencil. If at the place of stick suppose there is a coin है पानी में, तो its position will raise, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, तो again the reason behind it, refraction of light, and you can explain the same reason whatever I will explain here. Okay, now video is over. Next topic I will explain in second video. So students, please watch this video, and if you like, then show the like sign, and if you have any doubt you write in comment box. Thank you.